Enforcement Directorate now carrying out raids at the office of the West Bengal Minister and TMC leader Sujit Bose. We're getting in more details of another story that we are breaking at this hour. This has got to do with Mamata's warning to the Election Commission and to the BJP. As Bengal Chief Minister Mamata Bandyopadhyay has launched a blistering attack on the Election Commission, alleging that its officials were threatening officers of her government and acting under political influence even before the announcement of assembly poll dates, is what Mamata is now alleging, asserting that the BJP was playing with fire in the name of the special intensive revision of electoral rolls, warning that any attempt to tamper with the voters list would be tantamount to betrayal of democracy, says Mamata Bandyopadhyay. Anupam has got more details. This is a fight that continues with some conversation around SIR getting rolled out in other states. West Bengal also going to polls very soon, and that's the reason why the Chief Minister there, Mamata Banerjee, breathing fire. Well, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's sharp warning to the Election Commission over the special intensive revision has triggered a political storm in West Bengal right now. After Mamata Banerjee alleged Election Commission that they are working as the agent of central government and the special intensive review process, which is ongoing in Bengal right now, and a team of Election Commission is in West Bengal for the past 2 days to carry out the process of SIR in Bengal, and they are calculating things out here. And amid this process, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee yesterday in a press conference launched an attack to Election Commission and alleged a lot of things, especially on Amit Shah also. And after that, BJP has also started attacking Mamata Banerjee and saying that Mamata Banerjee is shielding Bangladeshis and Rohingyas. This is what is ongoing at present in West Bengal, a big political showdown between BJP and TMC over SIR process in West Bengal. Dates of the special intensive revision by the Election Commission. Again in spotlight, Mamata Banerjee has launched a blistering attack on the BJP and the Election Commission. Anupam continues to be with us. Anupam, talk to us about all right, in fact, we will go back to Anupam in a moment from now and telling our viewers about these fast-moving developments as far as West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's attack against the Election Commission is concerned. It's a blistering attack on the BJP and the Election Commission, warning them not to play with fire. Mamata Banerjee has threatened the Election Commission. In a video released by BJP, Mamata claimed Bengal is not like any other state. Even the British feared us. They had to shift the capital to Delhi because of the nationalist movement in Bengal, is what she said. Meanwhile, BJP has launched a scathing attack at Mamata, claiming that Mamata has threatened the chief poll officer and demanded security for the officer in question. BJP has also asserted that over 1.2 crore voters will be removed from the voter list when SIR will be conducted in Bengal. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसी गुलोके যারা বিজেপির কথায় আজকে শুধুমাত্র রাজনীতি করছে, গৌরীকরণ করছে, শিক্ষা থেকে শুরু করে সংস্কৃতি থেকে শুরু করে ভোটার লিস্ট থেকে শুরু করে উৎসব থেকে শুরু করে সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে একজন মির্জাফর আছেন ওখানে দিল্লিতে। এই মির্জাফরদের মৃত্যু জীবনে হয় না, তারা চিরকালই বেঁচে থাকে নানা কাজের মধ্যে দিয়ে। এই মির্জাফররা মনে করেছেন তারাই শেষ কথা বলবে, কিন্তু তারা যদি এসব করতে যান তারা কিন্তু দাঙ্গা থেকে শুরু করে আরো অনেক কেস আছে, সবকিছু কিন্তু বেরিয়ে পড়বে। As like as Bihar, SIR will happen in Bengal. After that, more than 1 crore fake voter names, including the death and double triple entry, may deleted. The gap between BJP and TMC only 22 lakh. We got 2 crore 33 lakh vote in last parliament election, and they got 2 crore 75 lakhs vote. Gap only, we need only 22 lakhs. যেভাবে
চতুর্দিকে এসআইআর নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে, সেই এসআইআর যদি বাস্তবে কার্যকারী হয় এখানে, তাহলে এই সরকারের কিন্তু কোনো প্রকার নিস্তার নেই। এসআইআর এ কমপক্ষে 1 থেকে 1,20,00,000 মানুষ যারা অবৈধভাবে ভোটার হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে আঁকড়ে ধরে বসে আছে, তারা কিন্তু বাদ যাবে। সেখানে রোহিঙ্গা মুসলিম, বাংলাদেশি মুসলিম, ভুতুরে ভোটার, এরা কিন্তু কোনোভাবেই পশ্চিমবঙ্গে আর ভোট দিতে পারবে না। এটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে। অতএব সাধারণ মানুষ যারা পরিবর্তন চায়, সাধারণ মানুষ যারা বাংলায় শিল্প আনতে চায়, বাংলায় শিক্ষা আনতে চায়, বাংলায় যারা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উন্নত করতে চায়, তারা কিন্তু ভোট দিতে পারবে এবং তাদের ভোটেই ভারতীয় জনতা পার্টি জয়লাভ করে আগামী দিনে সরকার গঠন করবে। এটা কিন্তু আমাদের দৃঢ় প্রয়াস এবং সেই প্রয়াস বাস্তবায়িত হবে আপনাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। I'm going to go across to Anupam Mishra for more details. Anupam, this is going to in fact snowball even further with the West Bengal government absolutely against the intention of the Election Commission to in fact do the similar exercise in the state of Bengal again, isn't it? How is the West Bengal government now proposing to take this matter up? Well, according to the attitude of Chief Minister Mamata Banerjee and earlier actions of her and government, it's very clear that they will oppose the SIR process in West Bengal. And Mamata Banerjee made it clear yesterday also that Bengal is not like other states. And she had also said that she is like a Bengal tiger. If you touch her, the Bengal tiger will retaliate. So it's a very clear indication by Mamata Banerjee that the SIR process, which EC is trying to start in West Bengal, will have to face a stern opposition by TMC. And Anupam, I'll just come back to you in a moment from now. BJP's Rahul Sinha is also with us. Rahul Sinha, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूछना चाहूंगी कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री का ये कहना है कि किसी भी तरीके से एसआईआर जो एक्सरसाइज है वो अलाउ नहीं किया जाएगा और इसको चैलेंज करेंगे। आपकी पार्टी का क्या कहना है? देखिए, ममता बनर्जी एक भय का वातावरण बनाने का कोशिश कर रहे हैं। सरकार उनको मालूम है एसआईआर होगा तो एसआईआर से सारे जो बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठी का नाम उन्होंने घुसा के रखा, जो उनका अपना प्रॉपर्टी मानते हैं। दूसरा बात, रोहिंग्या मुसलमान, उनका नाम घुसा के रखा। जो लोग मर गए वो उनका एक जीतने का आधार है। और एक आदमी का नाम 4 जगह में इन लोगों ने घुसा के रखा। यही तरीका से वो लोग जीत के आ रहा है। और अब जब एसआईआर हो जाएंगे, ये सारे नाम निकल जाएगा, 1 करोड़ से ज्यादा नाम निकलने का संभावना है। तो ऐसा सिचुएशन में तृणमूल को सरकार में रहने का कोई नौबत नहीं रहेगा, उसको जाना ही होगा। ये ममता बनर्जी निश्चित जानते हैं। और ये जानने का बाद से ही इन्होंने अभी ऐसा धमकी देने का काम चालू किया, एक कम्युनल टेंशन क्रिएट करने का काम चालू किया। और साथ साथ जो हमारा गृह मंत्री जी को गाली बक रहा है, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहा है, धमकी दे रहा है। तो ऐसा जो उन्होंने कर रहा है, इससे परिस्थिति को वो और भी खराब करने का कोशिश कर रहा है, जैसे एसआईआर ना ही हो। लेकिन बात यही है, हमारा मानना ये है एसआईआर होके रहेगा और ज्यादा वो गुंडागर्दी पे उतर आएगा तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन से ही चुनाव होगा, ऐसा ही हमारा अनुमान है। तो आप कह रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो जाए तो प्रेसिडेंट्स रूल होगा वेस्ट बंगाल में? All right, the Rahul Sinha of the Bharatiya Janata Party is saying that if things do go out of hand and there would be president's rule in Bengal is a claim that the BJP as a political party is making, saying that the Election Commission is now getting threatened by the West Bengal Chief Minister. This is a political fight that is not going to die down anytime soon.